फाइनली मेरी इंडियन मिठाई जर्नी की पहली बर्फी मोहनथाल। Hello everyone, Nidhi here from Cake-O-Licious and this is my Indian Mithai journey. Mohanthal गुजरात का ट्रेडिशनल स्वीट है। तो when I came across the ingredients for Mohanthal, मुझे ये काफ़ी सिमिलर लगा टू बेसन की बर्फ़ी या मैसूर पाक, ओनली बिकॉज इसका कोर इंग्रेडिएंट इज़ ऑल्सो बेसन। सो आई डिड अ लिटिल रिसर्च एंड वॉट आई फाउंड वॉज इनका कुकिंग टाइप एंड सर्विंग टाइप इज़ डिफरेंट। तो जैसे अगर मोहनथाल को ड्राई फ्रूट्स के साथ सर्व करते हैं, मैसूर पाक को प्लेन सर्व करते हैं। आई डिड माई बेस्ट टू मेक मोहनथाल विदाउट एनी नॉलेज अबाउट इट, और मैंने ये कभी ऑनेस्टली टेस्ट भी नहीं करा। सो कम सी मैंने कैसे बनाया, एंड ऑल यू एक्सपर्ट्स आउट देयर लेट मी नो कि हाउ आई डिड ऑन दिस। जब मोहनथाल का मिक्सचर रेडी हो गया, इट वॉज इन अ ब्यूटिफुल पाइपेबल कंसिस्टेंसी एंड मैं सोच रही थी कि इसको और अच्छे से कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग टार्ट्स, मिनी टार्ट्स। प्लीज़ कीप इन माइंड, जब आप मोहनथाल को पाइप करेंगे योर मिक्सचर शुड बी वार्म। अगर वो कूल हो जाएगा तो आप इतना स्मूथली और इतना नीटली पाइप नहीं कर पाएंगे। आइए देखिए मैंने कैसे करा। This was my take on मोहनथाल, a classic बर्फी जिसको मैंने रिवैम्प करा with a tart. Let me know in the comments below आपको दोनों वर्जन्स में से अच्छा कौन सा लगा, मोहनथाल बर्फी कि मोहनथाल टार्ट्स। मेरा ऑनेस्टली फेवरेट was definitely the मोहनथाल टार्ट्स, ओनली बिकॉज मोहनथाल का फ्लेवर ऑन इट्स ओन ही इतना अच्छा था कि with the crunch of that tart it was a match made in heaven or in my kitchen. Thanks for watching. Please like, share and subscribe to my channel and stay tuned for more such content.